ये मिले क्या? this guy is a legend. क्या इंडियन एथलीट्स भी इनको ढूंढ रहे थे ओलंपिक विलेज में? नहीं, shooting was 3 hours away from that, so they have a different village, different Oh, really? setup. Yeah. मनु So भाकर भी? no, they were all in a different place. So Okay. they were not with the other Indian athletes, and the shooting was going in somewhere else. But this guy is a legend, I think. Just a normal 51-year-old dad. कि क्या Tish. मेडल? Yeah. Amazing guy. और पता है, आई थिंक जब इन्होंने मेडल जीता तो इन्होंने उनके इंटरव्यू में कहा कि आई वांट माय पेट बैक. मतलब ये उनकी लाइफ स्टोरी है. अपेरेंटली ही टुक अप दिस स्पोर्ट बिकॉज उनकी सेपरेशन हो गई थी पार्टनर के साथ, अच्छा. एंड ही वांटेड टू जस्ट पुट आउट अ मैसेज थ्रू द ओलंपिक स्टेज, व्हिच इज ग्रेट. Wow. ओके, क्या आपने ये वाला इंटरव्यू He's देखा? an amazing player. He has shown during these Olympics that he's a very, very strong competitor, and I'm sure in 4 years from now he will be one of the favorites to win the gold. An amazing talent, a great guy, and I wish him all the best. He was playing so well in the big parts of both games, but I managed to relax and play my right game and win the match. But all credit to him as well. So there's a good story, like a backstory to this. So last time when Victor won the Olympics, he actually called me to Dubai. So he was shifting his base from Denmark to Dubai as an independent player, moving out of the Danish association. तो उसने बोला कि एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और आई वॉज व्हाट आई थिंक में काफ़ी टूर्नामेंट्स भी नहीं हुए. आई वॉज अराउंड 30-32, जस्ट गॉट इन टू दैट टूर्नामेंट, एंड आई हैड प्लेड हिम वंस इन ईयर बैक बिफोर. तो ही सेड कि यार आई एम मूविंग आउट ऑफ डेनमार्क, आई विल बी बेस्ड इन दुबई मोर, सो डू यू वांट टू कम एंड प्रैक्टिस with me? So, and like usually I had to discuss it with the coaches and everything. I said yes, I'm coming. I'm coming. So that was my first reaction, and for me वो के बाद I went there, I trained with him, and since then he has inspired me a lot in the way he conducts himself on and off the court. जो भी वो जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, इट वाज अ 2 weeks ट्रेनिंग पीरियड. वहाँ से उसके बाद से मैंने उसके साथ खेला, प्रैक्टिस किया, फिर मैं इवन वर्ल्ड टूर इवेंट्स में रेगुलर हो गया. तो काफ़ी मैचेस मैंने उसके साथ खेले, काफ़ी कुछ सीखा इन दैट 4 years. एंड हियर अगेन दिस ओलंपिक्स semi-final match against him, and yeah, so I think एक मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है वो चीज़ कि मैं खेला. बट एंड आई नो कि इन द मैच आई हैड हिम, and I had also beaten him in the past, and yeah, so these kind of things that motivates me कि yes, I'm on the right track, but again a lot of work is there. ये ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर एक चैंपियन प्लेयर क्यों बने? I would say I used to watch him play 3 years, 4 years back. He is a tall athlete. In badminton, थोड़ा मुश्किल होता है to always bend down, be low. So I think somewhere he was a world-class athlete. He won a world championship before that, but nothing like at one point he dominated the world of badminton for 2-3 years. I mean, इससे पहले I would say lately he's been not in top form, but still he won the gold, but he had dominated. तो I think जो 3-4 साल पहले इनने अपने फिटनेस पे काम किया है, ही वॉज वेरी टॉल एंड स्टेबिलिटी थोड़ा इशू था उनके लिए कि वो नीचे बेंड करना मुश्किल है. और ही वॉज अ वेरी गुड अटैकिंग प्लेयर, बट नॉट अ कंप्लीट प्लेयर. बट आई थिंक since he did that, he worked on his defense and then attack. So I think he has been a really, really tough competitor. I would say in last 3 years, if you look at him, जो इनने फिटनेस पे काम किया है, एंड ऑब्वियसली ओवर द इयर्स हिज एक्सपीरियंस हैज़ ग्रोन, और ही हैज प्लेड विद लिंडन, ली चोंगवी, ऑल दोज गाइज. बट उस टाइम पे वो उतना कंसिस्टेंट नहीं थे, बट एट वन पॉइंट ही बिकेम सो कंसिस्टेंट कि
if I'm playing against any other opponent in the world, at my 90% or my 85%, I am able to beat them somewhere. Like कि ठीक है, something or the other I can manage and beat them. Maybe some lower rank players, if I'm also playing my 70%, I can beat them. But for this guy to beat or even come closer, I had to be at my 100%. Like थोड़ा भी मैं अगर कहीं पे कम हूँ या हुआ है तो he'll just take advantage of it, and it's very difficult. And his mentality has been his strong point in last coming years. But again, to talk about the Olympics, I felt I had him, and I was playing the right game with the right approach. But just the matter of few points in the first set. Yeah, second set he played a bit more solid and he got that confidence. Okay. Long-term mentality basically, and his experience that are his strengths. Yeah. So and his approach towards badminton ki I think his life depends on that. Even in practice match he won't play easy against you. So the Danish coaches that I have worked with has told me this कि from a very young age उसका ऐसे था कि even on practice he'll just kill you. 5 points है तो 5 points. He won't give you that 6 point कि आप ठीक है अब मैं तो 20 पे पहुंच गया हूँ, अभी 1-2 ले भी लिए तो क्या. So everyone talks about that mentality कि even जब भी वो matches खेलता था, practice खेलता था, ठीक है वो हारता भी होगा, but अगर वो आपको 21-5 या 21-4 मार रहे हैं तो वो 4 ही मारेगा. Then that way he is very ruthless. अच्छा. ओके. मैंने एक चीज़ जानी है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में और रैकेट स्पोर्ट्स के बारे में कि आपके स्पारिंग पार्टनर्स बहुत मैटर करते हैं. तो द फैक्ट दैट ही टोल्ड यू कि भाई आ जाओ आप दुबई, मीन्स इज ऑब्वियसली सीन समथिंग इन यू. और ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में कहना इट्स नॉट अ स्मॉल डील ब्रो. तो इफ अ चैम्प इज सीइंग दैट इन यू, द कंट्री इज सीइंग दैट इन यू. Again, I reiterate that we're too proud of you, and too proud of where Indian badminton has gone with you. So I'm just very excited about your next 4 years as well. Just needed to convey that. Yeah, thank you. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.